Morning dear student. Now today we are going to discuss about major food crops in India. So dear, in India, first major food crops we are going to discuss about rice. So rice is the major food crops. India is the second largest producer of rice in the world after China. It is the kharif crops and temperature required 25 degrees Celsius and high humidity required to growth of the crop, and rainfall is 100 centimeter. Which states mostly famous for the rice production are Punjab, Haryana, Western UP, parts of Rajasthan. So when पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स कम्स, तो ये दोनों स्टेट्स कम्स टुगेदर, तो व्हेन यू राइट पंजाब मस्ट बी राइट द हरियाणा आल्सो. तो दिस इज द मेजर फूड क्रॉप्स वी हैव डिस्कस, that is the rice. And second food crops is wheat. It is rabi crops. Rabi crop you know very well, grow in the October or November, first week of December. Second most important cereal crop है, require cool growing, means the cold temperature are required during the growing season, or during the harvesting bright sunlight required during the harvesting in the month of March or April. Rainfall 50 to 75 centimeter. Locations, mostly those regions are famous for wheat production. Northwest Ganga Satluj plains, black soil of Deccan Plateau also suitable for wheat crop. States are Punjab, Haryana, UP, Bihar, MP, and Rajasthan is famous producer of wheat crop. Next is the millets. So there are three important millets: ज्वार, बाजरा, रागी. तो in this, these are the coarse grains and high nutrition value, जो बहुत ज़्यादा इनमें nutrition value होती है. तो in this we'll discuss about three important ज्वार, बाजरा and ragi crop, and this crop are mostly also used main fed crop, mostly grown in the moisture areas, hardly needs irrigation. Rabi is crop of dry regions and grows well on the red, black, sandy, loamy soils, and Karnataka is the largest producer of ragi, followed by the Tamil Nadu. Like a jowar, grown in the moisture areas and contain the phosphorus, calcium, and states famous Maharashtra and Karnataka, Andhra Pradesh, MP are famous producer of jowar crop. Next, bajra, grow in sandy soil and black soil. Example Rajasthan, Maharashtra, and UP, Gujarat, Haryana is largest producer of bajra crop. Ragi crop, now we have discussed already, contain iron, calcium and रफेज. तो कभी कभी वन वर्ड क्वेश्चंस आता है कि विच क्रॉप इज कंटेन द रफेज. तो यू मे बी राइट द रागी क्रॉप contain the rafes, grow in the dry region, red and black soil, sandy soil also. States famous Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand are largest producer of ragi crop. Now our next crop is maize, used as the food as well as the fodder. ये साथ में हमारे कंजप्शन के लिए यूज होती है और कैटल के लिए भी यूज की जाती है एज ए फूडर. Mostly in Bihar, it grow in the Rabi season also.
बाकी रेस्ट ऑफ एरिया में खरीफ सीजन में ग्रो होती है, बट बिहार में रबी सीजन में भी इसको ग्रो किया जाता है। टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस आर रिक्वायर्ड। इट ग्रोज वेल इन द ओल्ड एल्यूअल soil and it to increase the production in maize crop by high yielding variety seeds by using fertilizers. Proper irrigations are required and states famous Karnataka, Bihar, UP, Andhra Pradesh, Telangana and Madhya Pradesh are famous producer of this crop. In continue next major crops of India are pulses. तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। हम साथ में प्रोड्यूस भी करते हैं और ड्यू टू द वास्ट पॉपुलेशन हम कंजप्शन लेवल भी बहुत ज़्यादा है पल्सेस की इन आर कंट्री। तो देर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पल्सेस आर ग्रोन इन इंडिया। मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, लिविंग अरहर, all other plants are leguminous plants. Leguminous plants means the इस pulses या इनकी वजह से फर्टिलिटी रिकवर होती है। तो बहुत सी बार फार्मर्स इस क्रॉप को एक अल्टरनेट पीरियड के बाद ग्रो करता है टू रिकवर द सॉइल फर्टिलिटी। तो बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इट इज़ यूज टू ग्रो इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। These are provide the protein and states famous for the pulses production are MP, UP, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka. Now in continue to major food crops, another one is the sugar cane. Grow in the hot and humid climate, temperature 21 to 27 same as it required for the maize crop. Same temperatures are required. Take almost year to harvest. ये पूरा साल ले लेती है हार्वेस्टिंग ग्रोन पीरियड से लेके हार्वेस्टिंग तक। एंड रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रो द शुगर कैन क्रॉप। इस बार बोर्ड में एक क्वेश्चन भी आया था, क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर रेनफॉल फॉर द शुगर कैन इन टेबल फॉर्म। India second largest producer of sugarcane after Brazil. Brazil is the first producers, largest producer. States famous for the sugarcane are Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Punjab and Haryana, Bihar and UP also. So these are the famous producers of sugarcane crop. Now comes on the oil seeds. So in oil seeds mostly are groundnut, mustard, coconut and till, soybean, castor seeds, sunflower seeds mostly we use for to cooking the vegetable or for cooking purpose. These oil seeds are used. And linseed and mustard are the part of rabi crop. Groundnut grown in the Kharif season, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात। ग्राउंडनट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस गुजरात। ऑयल सीड्स आर यूज टू मेक सॉप कॉमेस्टिक इंडस्ट्रीज। दीज आर द आल्सो यूज इन द इंडस्ट्री सेक्टर आल्सो।